Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर what we are going to do, we are going to solve a past paper again. एक पूरा past paper solve करेंगे. This is October November 2020 and the variant is 1-3 and again 1 hour 45 minutes का पेपर है. थोड़ा सा long पेपर है, अच्छा पेपर है ये. That's why we are solving this paper again. So अगली क्लास से मैं क्वेरी सेशन भी रखूंगा. इन दैट पर्टिकुलर क्लास वो मैं आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा. जो भी टॉपिक्स या कोई सवाल पास पेपर का जिसके अंदर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पहले से मुझे सब बच्चे इन्फॉर्म कर देंगे और मैं आप लोग के साथ एक सीक्वेंस शेयर कर दूंगा कि दिस इज द क्वेश्चन. मैं इस सीक्वेंस के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के इस साल का ये क्वेश्चन इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा. तो इस तरह आप लोग का जो पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक वन ऑफ आवर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है हमारी, उन्होंने बताया था कि सर मुझे ब्लॉक पैरिटी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है. तो सबसे पहले हम लोग वो कर लेंगे. इसके बाद अलोंग विद दैट जो भी जिन क्वेश्चन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग वन बाय वन उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम. अगेन द इंस्ट्रक्शंस आर सेम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ये बता रहे बच्चों, शो इफ ईच डिवाइस इज एन input, output or storage device. Solid state drive, so of course that is storage. Headphones, headphone के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, that's an output device. आप लोग सुनते हैं. 2D cutter, तो 2D cutter भी बच्चों क्या है आपके पास, it's a output device. LCD projectors, so that is again an output device. Microphone, input device. So first question 5 marks. ऐसी क्वेश्चन है, मजा आ जाए भाई. ओके, Pig has a computer that has a central processing unit based on von Neumann architecture. Identify the component within the CPU that controls the flow of data. So of course that is control unit. हर चीज कंट्रोल यूनिट डील कर रहा होता है. Identify the component within the CPU where calculations are being carried out. So that is arithmetic logic unit, ALU, arithmetic logic unit. Identify the component within the CPU that stores the address of the next instruction. So that is the program counter. Identify the register within the CPU that holds an instruction that has been fetched from memory. Holds the instruction that is being fetched. Identify the register within CPU that hold the instruction of that has been fetched from memory. भाई इसमें तो दोनों हो सकते हैं आपके पास, बिकॉज एक इंस्ट्रक्शन फैच होके आपके पास it can be stored in memory data register, it can be stored in CIR as well. अब वो डिपेंड करेगा कि क्या सिनेरियो. यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करा कि इंस्ट्रक्शन MAR से आ रहा था या MDR से वो CIR के ऊपर कॉपी किया जा रहा था. सो दोनों आंसर आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा. सो आई विल बी गोइंग विद करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. Okay ji, identify the register within the CPU that holds data
that has been fetched from memory. तो डाटा बच्चों कौन होल्ड करता है आपके पास? एमडीआर, मेमोरी। ऊपर हम लोगों ने इसका मतलब सही किया, मेमोरी डाटा रजिस्टर। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी। बाइनरी कन्वर्जन हुआ है बच्चों 145 का, यू नीड टू इन्फॉर्म कि ये करेक्ट कन्वर्जन है या इनकरेक्ट है। सॉरी, ओके, सो 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So 128 plus 16, so that will be 16 ऐड करें अगर हम लोग, so that will become 6 ये हो जाएगा, 10 ऐड करूं तो 138 144 and 1 ऐड किया मैंने बच्चों, that will become 145. so this conversion is perfectly fine, correct conversion है। 179 we have, so now we need to add 128 plus 32 plus 16. so कहाँ पे ऐड करूं, कोई जगह नहीं दी हुई इन्होंने, यहाँ कर लेते हैं। 128 plus 32, that will be 160 plus 16, so that will be 176. ये फिर बच्चों 4 and 1 5 और ऐड करना है, so this will become 181. so that is wrong, incorrect calculation that we have. इसके बाद बच्चों 11 है हमारे पास। 11 तो बड़ा सिंपल है, 1 2 4 8 16, दिस इज एक्चुअली, ये हमारे पास क्या रहे 19 है ये, और ये 11 है, सो दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड द लास्ट वन बच्चों इज 100, सो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 8 16 32 64 and 128. so 64 plus 32, that is equal to 96 plus 2, that will be 98. तो हमारे पास 98 आ रहा है, लेकिन ये 100 है, so this is also incorrect. 4 marks. 4 marks. Moving forward, now you need to convert them into hexadecimal. 3 marks आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे सवाल आ जाए बच्चों, मजा आ जाएगा। आपको पता है हर 4 डिजिट्स के ऊपर आप लोग क्या करोगे, 4 बिट्स के ऊपर क्या करोगे, द सीक्वेंस इज 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, so this will become 12. 12 क्या होता है भाई, 12 is C, this is 4 and this is 0, so C40 is the right answer. Moving forward towards question number 4. I think we have done this type of question before. वापस आ गया, कर लेते हैं। 4 मार्क्स का है, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। इतने मुश्किल नाम यूज किए मैं इसमें। Eugene, I guess that's the right pronunciation for that. Eugene has a web server that stores his online shopping website. Describe how web pages are requested and displayed on customers' computer. नहीं हसन, आपको हसन इज आस्किंग कि सर ब्रैकेट में लगा के 16 बेस बनानी है। नो नीड, वो तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए पहले करवाता था, लेकिन नो नीड फॉर दैट, ठीक है।
So customer access web browser using customer enters URL in the web browser. Request is sent to DNS for corresponding IP address. DNS returns the corresponding IP address to the web browser request on that particular IP of the web server. Web server responds back sending the requested pages back to customer where they are interpreted by web browser and displayed on screen. So a perfect reply, bachcho, to the examiner. Let's move forward. But do we always have to be this specific to the situation given? Because the marking scheme wasn't really. I think given scenario यही है आपके पास, you just need to follow these steps. अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं steps को, so चलता है इतना O levels के अंदर. But the steps are same. मतलब यही आपके पास steps follow किए जाते हैं. इसके अंदर और भी additional steps है, like SSL की verification भी होती है आपके पास. So you can write that as well. लेकिन वो फिर बहुत ही ज्यादा डिटेल में हो जाएगा. अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो फिर मैं यहाँ पे SSL को भी इंक्लूड कर देता कि SSL सर्टिफिकेशन आती है आपके पास एंड सो ऑन. अनस आई विल शेयर बेटा दिस पीडीएफ. मैं अभी क्लास के बाद सारी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ एक साथ, ठीक है? नो नीड टू कॉपी. मूविंग फॉरवर्ड, स्टेट 3 ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स again web server. So there are multiple threats. बहुत सारे ऑनलाइन आप लोग को बात करनी है. वेब सर्वर पे सबसे खतरनाक जो नाइटमेयर होता है वेब सर्वर्स के लिए, that is denial of service attack. Then you can have phishing.
फिशिंग तो सर्वर के ऊपर नहीं कर सकते, हैकिंग कर सकते हैं। हैकिंग, ये फिशिंग पर्टिकुलरली आप इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, वेब सर्वर को आप टारगेट नहीं करते। सो यू कैन गो विद द हैकिंग, यू कैन गो विद द स्पाईवेयर, हम सर्वर की एक्टिविटीज को एक्टिव वेरीफाई कर सकते हैं। वी कैन बी अटैक्ड विद अ वायरस। सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5. Scanner, Arjun uses a scanner to create digital version of the printed documents. A scanner is attached to his computer using a USB connection. Fine. Tick to show if the USB connection uses parallel or serial transmission of data. Of course, serial होता है बच्चों यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। One bit is sent at a time using single wire. ठीक है, 3 marks. State 3 benefits of using USB connection. Like USB port के 3 benefits. So हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। द मेन पॉइंट ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं यहाँ पे, बैकवर्ड compatible, different, transmission rates, industry standard. ठीक है, moving forward, Arjun uses internet to send digital documents to his friend. He wants to make sure that the documents are sent securely. Identify 2 protocols that can be used to transfer data securely. तो बच्चों आपके सिलेबस में 3, वैसे तो और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपके सिलेबस के अंदर 3 प्रोटोकॉल्स हैं, SSL, TLS, HTTPS. Although SSL and HTTPS, there is a deep connection between both of them, but you can count them as a separate protocol over here. ठीक है, so you can write any 2 over here. This completes our question number 5 as well. Okay, now let's move towards question number 6. Ilsa writes a paragraph in the examination about encryption. We need to complete the paragraph about the connection. Data is encrypted using a dash. Data को हम लोग encrypt करते हैं using a key. एक की यूज करते हुए डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं हम लोग की. दिस इज एन डैश, दिस इज एन एन के साथ अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है, एल्गोरिथम ही आ सकता है, और तो कोई मेरे पास वो नाउन बन नहीं रहा, नाउन नहीं, वो क्या, सॉरी, वॉवल्स नहीं आ पा रहा कोई. सो data is encrypted using a, this is an algorithm. Doesn't sound good to me, algorithm, but कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता. कुकी आ नहीं सकता, एन कुकी नहीं होगा, एन साइफर नहीं हो सकता, एन पैडलॉक, एन प्लेन, एन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं हो सकता. ठीक है, सो
data is encrypted. This is n key. फातिमा बोलिए वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वोकैबुलरी थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। दिस इज अ की होना चाहिए ना, वैसे अगर हम वैसे ग्रामर देखें अपनी, तो एक की अगर बोलना है दिस इज अ की, दिस इज एन की तो नहीं बोलते हम लोग, तो दैट्स रॉन्ग, एल्गोरिथम ही आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा मैं काट के उसका, अनस बोले पैराग्राफ काट के कर दूं, नहीं भाई दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, that is used to scramble the data. The data before encryption is known as plain text. Plain text. When data has been encrypted, it is known as ciphertext. These are the pretty easy questions. To read the encrypted data, it needs to be decrypted using, again using a key. तो की से आप लोग क्या करते हैं, उसे डीक्रिप्ट कर देते हैं। 5 मार्क्स, अमेजिंग, आसान सा सवाल। 5 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, 7 binary bits, binary values are being transmitted using one computer to another. We just need to inform के even parity check है या odd parity check है। 1 1 2 even, 1 2 even, 1 2 3। लाइक यार ऐसे सवाल अल्लाह करे आप लोग के पास भी आ जाएं। 1 2 इवन, ठीक है, 4 मार्क्स। अच्छा जी, स्टेट व्हाई अ पैरिटी चेक मे नॉट डिटेक्ट डेटा ट्रांसमिशन एरर्स। सो आप लोगों को मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है, there are multiple scenarios, transposition of the errors, if two bits are being swapped, if two opposite bits are being swapped, so that is called transposition. लिख भी दें इसको थोड़ा सा यहाँ पे, और स्वैप, ठीक है भाई। अच्छा जी, गिव वन अदर एरर checking method that could be used to check for errors in data transmission. So during transmission you can apply checksum, you can go with ARQs, ठीक है। सो ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा के अंदर आप चेकसम और ARQs भी अप्लाई कर सकते हैं। Now moving forward towards question number 8. 9 10 11 12 13, माय गॉड ज्यादा बड़ा लेंथी पेपर है भाई। चलो जी, Edit is buying a new computer monitor that displays images using LCD technology. Explain what is meant by LCD technology. 3 marks. Let me explain. It is liquid crystal display millions of pixels are arranged in a form
of matrix. LCDs uses light properties of liquid crystals. Crystals can be turned between opaque, like they won't be allowing the light to be passed. इसको opaque क्यों भी कहते हैं. And transparent to allow light to be passed. So I think that's more than fine. अगला बोले बच्चों 3 benefit of using LCDs. So power consumption बहुत low होती है, low power consumption, quality of the images is better. High resolution of images. Does not have flickering effect. फ्लिकरिंग जो कभी कभार आपकी स्क्रीन जो है वो जर्क कर रही होती है, शेक कर रही होती है, so we call that as flickering effect. Further, वेरिएबल टेम्परेचर्स के ऊपर भी आपके पास काम करती है. एंड वी हैव many options जो आप यहाँ पे कोई भी 3 बेनिफिट लिख सकते थे. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9. गिव 3 similarities between CD and a DVD. I have for the first time मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है बच्चों. ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है. ठीक है, चले. सो सिमिलैरिटीज बच्चों, सीडीज एंड डीवीडीज देयर आर मेनी. सो कोई भी मैं 3 लिख देता हूं. बोथ यूजेस रेड लेजर लाइट फॉर reading and writing the data. Both are optical storage medium. Both uses pits and lens to store data. And बच्चों both are non volatile memories, like permanent storage होती है दोनों आपके पास. So these are the differences. One difference
between CD and DVD. So storage capacity की बात कर लेते हैं. DVDs has more storage capacity as compared to a CD. Further, it also has the highest, मतलब dual layer भी होती है आपके पास in DVDs. CDs में सिर्फ single layer होती है आपके पास. The wavelength of DVDs is shorter as compared to CDs. So these are the reasons that you can write over here. Moving forward, logic gate. I won't be wasting much time. मैं जल्दी से solve करता हूँ बच्चों इस equation को. B A नॉट दोनों एंड हो रहे हैं. सो A के आगे मैंने नॉट लगाया. B सिंपल है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. A और C ये दोनों क्या हो रहे हैं? A और C. So we have A, we have C और ये दोनों आपस में और हो रहे हैं. एंड ये दोनों का रिजल्ट बच्चों क्या हो रहा है? इट्स बीइंग XORed. And that is equal to X. Now we need to create this truth table. सबसे पहले नॉट निकालने सारे. So it's easy to calculate the knot. A नॉट है सिर्फ हमारे पास. So A नॉट 1 1 1 1 0 0 0 0. Now A नॉट और B क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. So this is A नॉट, this is B. एंड कर दें इसे और इसे नंबर देने बच्चों 1 2 वो X ही हो जाएगा. So 1 कैलकुलेट कर लें. 0 0 1 1 0 0 0 0. Now A और C क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं. So we have A, we have C. So ये दोनों और हो रहे हैं हमारे पास. So 0 1 0 1 1 1 1 1. Now 1 और 2 बच्चों क्या हो रहे हैं? XOR हो रहे हैं. And that is equal to X. So 0 1 1 0 1 1 1 1. So that's the right answer that we have. I'm not sure कि right answer है, कोई mistake अगर मैंने ना करी हो. Hopefully वैसे mistake के chances कम ही है क्योंकि ये छोटा सा आसान सा सवाल था हमारे पास that we have of the logic gates. Moving further forward बच्चों, question number 11 बच्चों अब मैं नहीं करवा रहा बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारी दफा ये क्वेश्चन परफॉर्म कर लिया है. इसके चले मैं सिर्फ स्टेप बता देता हूं मैं. ठीक है. A theme park has game where a player tries to run to start to the finish without getting wet. The system for the game uses sensors and a microprocessor to spray water at the player as they runs past each sensor. Describe how sensors and microprocessor are going to work on in this scenario. So players बच्चों क्या करेंगे? Players are going to run. Sensor, suitable sensor क्या हो सकते हैं? Pressure sensor या फिर we can go with the motion sensor या you can write the infrared sensor. So will be used to detect
अप लेयर, वैल्यू कहां जाएगी, एडीसी के पास जाएगी, एडीसी से वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगी। आई एम नॉट राइटिंग द होल स्टफ, सिर्फ एक ब्रेन स्ट्रोमिंग करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि 6 मार्क्स कैसे देने। माइक्रो प्रोसेसर बच्चों क्या करेगा, कंपेयर करेगा विथ प्रीसेट वैल्यू, और फिर क्या करेगा बच्चों, एक्शन टेक प्लेस करेगा कि अगर उसको स्प्रे करना है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, कि उसको स्प्रे करना है और नॉट, और ये प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यूअसली रिपीट होगी। So these are the scenarios for getting full for 6 marks. अच्छा जी, let's see question number 12. Warner says that he has a very good internet service provider that provides several services. 5 statements about ISPs that you need to find true or false. Provide access to the internet to for customers. Yes, true. Can determine the maximum bandwidth available for customers. Yes. Monitor the volume of data. Yes. Can provide an IP address. Yes. Stores the content of all web pages available on the internet. Of course not. वो तो आपको सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस देता है, वो सारी चीजें स्टोर थोड़ी करता है कोई अपने पास। ठीक है, अ गुड क्वेश्चन, 5 मार्क्स। मतलब घबराना नहीं होता बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर, जस्ट गिव टाइम। एक दफा, दो दफा, तीन दफा जब आप रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू व्हाट एग्जामिनर इज एक्चुअली आस्किंग ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन। Sir, are analog values converted first before the values are being transferred to the microprocessor, because marking scheme had a conversion after the value has been transferred to the microprocessor? No, value will be converted first. Do not follow MS, हमेशा मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं किया करें। ठीक है, वो एक आपको एक आइडिया देने के लिए प्रेजेंट की जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, एडीसी है क्या, इट्स अ डिवाइस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। माइक्रोप्रोसेसर क्या है, इट्स अ प्रोसेसर that can only process the binary values, the digital values. So माइक्रो प्रोसेसर जो वैल्यू प्रोसेस करेगा वो डिजिटल ही होनी चाहिए, इट कैन नॉट प्रोसेस एनी एनालॉग वैल्यू। ठीक है, सो ये प्रोसेस पहले की जाती है। ओके जी, फिशिंग फार्मिंग में वन सिमिलैरिटी बतानी है आपने, सो दैट्स एन इजी वन। टेम्परेचर सेंसर, ये क्या सवाल है सर, टेम्परेचर सेंसर होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में? नो, टेम्परेचर सेंसर तो नहीं, बच्चे भाग रहे हैं, देयर इज नथिंग अबाउट द टेम्परेचर दैट वी कैन मॉनिटर। बच्चे भाग रहे हैं, यू नीड टू जस्ट सेंस। तो प्रेशर हो सकता है आपके पास, मोशन हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है हमारे पास। ठीक है, वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग, बोथ हैज नेगेटिव इंटेंशंस। बोथ having negative intention and stealing
personal information. अच्छा जी, two differences. So for in farming, a code is installed in system that redirects to a fake website. While in phishing, we have fake emails. Another difference बच्चों, in farming, you are automatically redirected to a fake website, while in phishing, you need to open link or attachment directing to a fake website. So these are the differences between बच्चों between fishing and farming. So एक अच्छा पेपर था हमारे पास यहाँ पे. This was October November 2020. Variant was 13. So आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. और मैं अब आप लोग की कुछ क्वायरीज और कुछ जो कोई क्वेश्चन अगर आप लोग से कोई सॉल्व नहीं हो रहा पास पेपर्स का, तो उसके ऊपर भी अब हम लोग अगली क्लास के अंदर बात करेंगे. तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ. अमर मॉक का मैं आपको अपडेट करता हूँ बेटा. फ्राइडे वाले दिन है, फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन मैं कंडक्ट करूंगा. आपको भी इन्फॉर्म करता हूँ ग्रुप के ऊपर.